and ask questions whenever it is required. Okay, make it an interactive session. Okay, please feel free to contact me or ask questions, whatever you think that is bothering you. या कोई चीज़ अगर clarity नहीं होती, तो you guys are easy to ask questions. Okay, okay. तो जन्नत आप kindly वो share करवा देंगी slides. Assalamualaikum everyone. I welcome you all in this online session on PLAB. I am Liza Akhtar, the Deputy Head of Education Department, Synch Khaja Muhammad Sabda Medical College, and I am your host for today's session. We are excited to have you with us and hope you find this session informative and helpful. To begin our session, I would like to call Akib Javed to recite some verses of Holy Quran. Akib, over to you, please. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Jazakallah, Akib. Now let's formally start our session. All of you are requested to leave your questions in the chat box. We'll try to address as many as possible at the end of the session. We are having with us our very own former Synch President of 2021, Dr. Syed Bilal Hassan with us as our Speaker of PLAB. Dr. Bilal has never failed to impress KMSMC in his student life, be it the first medical scientific research conference in Khaja Safdar or EMS events. He always made sure to level up things with his amazing leadership qualities. Dr. Bilal, over to you. Thank you so much for such a wonderful introduction. Thank you. And I would really appreciate, Kip, you have got a wonderful voice. Jazakallah for impressing all of us. Thank you. Okay, so would you please share the slides, please? Janat, are you there? बिलाल भाई स्लाइड्स मैंने शेयर की हैं, किसी को नजर आ रही हैं या नहीं? I'm sorry, I can't see that. Just a second. I'm sorry, but I can't. Yeah, I'm so sorry. Yeah, I can see that. Okay, thank you so much, Amar, for sharing the slides. So, Assalamu alaikum, everyone. This is Dr. Bilal Syed working as a virtual medical assistant at KMSMC Solutions Private Limited.
So this slide is basically a few of my achievements throughout my 5 year journey at Fortis of the Medical College. You guys can see that. So coming towards the learning objectives of today's session. So first of all, we started by getting a basic introduction to GMC, that is what is General Medical Council. Next, we would learn something about NHS as well, then formal introduction to PLAB, then about the transition of PLAB to UKMLA, parts of PLAB, PLAB 1 structure and preparation, PLAB 2 structure and preparation, total cost of the journey, and the most important question is if worth it or not. Then there are some points I wanted to discuss, which I would leave for the end. Thank you. Amar, could you please turn over to the next slide? So, coming towards the introduction of General Medical Council. So, जिस तरह से पाकिस्तान में आप लोगों को आइडिया है कि there are two bodies working and managing the healthcare system in Pakistan. So, there are PMDC and UHS in Punjab generally. So it's approximately the same thing. General Medical Council is basically it plays a crucial role in the UK's healthcare system, particularly in the relation to doctors and medical professionals. They basically regulate the doctors, giving them license, making sure that they have the particular skill set to work in the UK system, UK healthcare system. They are also responsible for licensing and registration of the medical practitioners in the UK. They have to set standards to stay up to date with the medical advancements. They have the authority to take disciplinary actions against the misconduct. They have to promote good medical practice and making sure that patient safety is the priority of every doctor. So basically, इससे हमें you would get a basic info, basic structure आपके mind में develop हो गया होगा कि what is the role of GMC? क्योंकि आप जब देखेंगे तो everyone would be asking that you have to get the GMC license, you have to get the GMC license to practice in the UK. What is GMC basically? So I just wanted कि आप लोगों को एक clarity मिल जाए कि what is GMC, what is its role in UK healthcare system. So I think आप लोगों को थोड़ा सा idea हो गया होगा regarding that. Okay. Uh, Now coming towards the National Health Service, NHS. ठीक है? Now, NHS is basically the publicly funded healthcare system in the UK that is responsible for providing the healthcare services to the population. It delivers healthcare services, including the primary care that is provided by the general practitioners, GPs, providing the hospital services, mental health services, and the community care. It promotes public health and disease prevention initiatives. It trains healthcare professionals and supports the medical research and innovations. They set standards for healthcare delivery and the patient safety across the system. So generally, जब भी सुनेंगे, you would hear two lines. First of all, you would hear that आप लोगों को यूके में प्रैक्टिस करने के लिए आपको जीएमसी लाइसेंस की जरूरत है, ऐसे ही. Next, they will say कि यूके के अंदर दो healthcare systems हैं, one is the government and one is the private. Government healthcare system is the National Health Service, NHS के अंदर FY2 करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना है, blah blah blah. जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर CPSP is responsible for ensuring training programs, क्योंकि जब आप 5 year MBBS and 1 year of house job, after that you give FCPS part 1. FCPS basically करने का मकसद होता है that you guys are getting training in the registered hospitals in the Punjab. ठीक है, तो बेसिकली इसका बेसिक मकसद हमारा ये होता है कि आपके डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर आपको पोजीशन दी जाए, आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर इंडक्शन मिले, आप अपना जो है 4 और 5 years की ट्रेनिंग होती है, आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं उधर से, एंड देन यू बिकम अ कंसल्टेंट and work in the community as a consultant of that particular field, particular specialty.
Similarly, NHS is also responsible for training the doctors. हमारे लिए ये important है because we have to get induction in a training program. So NHS is responsible for that. अब उसका different criteria होता है हर training program का. That is not required right now. अभी basic हम लोग सिर्फ introduction तक ही महदूद रहते हैं. I hope I'm able to clear my point. Now coming toward what is PLAB. So basically, it's a short form. It's an acronym for Professional and Linguistic Assessments Board, and it's a series of assessments that international medical graduates, IMGs like us, need to pass in order to practice medicine in the UK. They ensure that the doctors present in the UK are qualified who are trained in the UK, within the UK, or they have completed their medicine in the UK. So, what are the parts of PLAB? So, basically, PLAB प्लाब आप लोगों को आइडिया है जो आप लोग देख के इस सेशन में आप लोगों ने ज्वाइन किया है प्लाब इज बेसिकली अ लाइसेंसिंग एग्जाम इट्स जस्ट अबाउट द लाइसेंस let me give you an example whenever there's a student who studies in China or Russia or Kyrgyzstan or wherever in the world जब वो पाकिस्तान में आते हैं to practice here as a doctor तो आप लोगों ने सुना होगा कि they have to clear a PMDC का टेस्ट उनको देना पड़ता है सो इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट पीएमडीसी का टेस्ट भी वो सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि वो इंश्योर कर सकें कि उधर से जो वो अपनी डिग्री कंप्लीट करके आए हैं दे आर इक्वलेंट टू द डॉक्टर्स टू द स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ पर अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया है और जो ट्रेनिंग यहाँ पे लिए दे आर बेसिकली इक्वलेंट सो बेसिकली इट्स जस्ट अ लाइसेंसिंग एग्जाम प्लान देने के बाद यू वुड गेट अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन द यूके in a private setup, or you can give further tests and get induction in the training programs in the UK. So, coming towards the parts, what are the parts of the PLAB? There are two parts, PLAB 1 and PLAB 2. So, PLAB 1 basically assesses the doctor's knowledge and understanding of the medicine, including clinical scenarios and management. PLAB 2 assesses clinical skills, communication skills, and ability to work in the UK healthcare system, including OSCEs where candidates interact with the simulated patients. So, PLAB 1 is a written exam that is conducted in Pakistan at two centers, Karachi and Islamabad, whereas PLAB 2 exam is conducted in the UK, Manchester, and we have to go to that particular place and we have to appear in the exam. PLAB 1 written है, PLAB 2 is totally OSCE. So उसमें आपके interpersonal skills, communication skills, आपका knowledge, each and everything वो observe करते हैं कि आप fit हैं यूके के हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए कि नहीं एक बेसिक स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है इफ वी प्रूव दैट if we pass it then we can apply for the GMC license it is simple as that अब थोड़ा सा जो है इसमें मजीद इसको हम लोग डायसेक्ट करते हैं सो आजकल जो बहुत ज़्यादा कंसर्न है सब लोगों का और अब ट्रांजिशन हो भी चुकी है प्लाब की UKMLA में ठीक है because 23rd of May was the last date जब तक it was planned now they are making it more in align it to the UKMLA content map so this is an extract from the official website of GMC because obviously अभी तक कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ UKMLA का तो इसलिए हमें भी मुझे भी श्योर नहीं था because I have written a PLAB 1. I haven't go for PLAB 2. Sorry, UKMLA. So, उनकी वेबसाइट पे मैंने जब रिसर्च की तो I got it that we want to reassure candidates that PLAB's compliance with the MLA requirements affects exam administrators only, not the individual candidates. In the eligibility criteria, English language requirements, and standard of the test, research policies, experience on the day, and PLAB validity periods have not changed as a result of this process. So basically, what they mean to say is, अभी तक हमारा जो PLAB है, that is exactly
how it appeared before. यूकेएमएलए का जो रूमर्स थे कि यूकेएमएलए के अंदर इट्स टोटली गोना बी ऑनलाइन, आप लोग जो है कंप्यूटर पे बैठ के आप लोग करेंगे, बिकॉज हम लोगों ने तो पेपर एंड पेंसिल पे किया था एग्जाम। तो ये थोड़ा सा जो है एम्बिग्विटी थी, तो ये उन्होंने मेक श्योर कर दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स का थोड़ा सा इसमें चेंजिंग्स आएंगी, हम लोग अफेक्ट नहीं होंगे। हमारा content map, I have gone through it. There, it's more you may say that it's a bit more refined as compared to the PLAB blueprint. PLAB blueprint के अंदर चीजें काफी haphazard लिखी हुई थी। UKMLA content map के अंदर, they have given the exact topics. Okay, in topics, so you have to make sure that you know about these things. You know about these topics. In इसके patients किस तरह से present कर सकते हैं, इनका diagnosis किस तरह से करना है, what are the requirements to make a differentials, दो conditions को differentiate किस तरह से करना है. So basically आपके पास content map is a more detailed version and more to the point thing as compared to the PLAB blueprint. So overall इसमें as such कोई issue नहीं है. So you guys can relax, but yes, we have to wait till August कि उसमें क्या होता है, किस पैटर्न पे आता है, what are the requirements, because वो prerequisites जो होते हैं एग्जाम के पेशेंट्स कैंडिडेट्स को वो लोग मेल करते हैं a week before. So coming towards PLAB 1 structure. So it's a paper-based exam that consists of 180 MCQs. 3 hours are allotted to it, 1 minute for each question. Candidates are presented with the clinical scenarios or statements, followed by the STEM that asks specific questions or required decisions. 5 answer options are provided for each question with only one correct answer. Each question is worth 1 mark. There's no negative marking in this exam. Candidates receive total score based on their performance in the single paper. Passing mark is determined by the GMC and may vary slightly between different exam settings. So generally, you can have an idea marks were 112, 114, 117. Once it was 124, but this time it was because मैंने अभी ये मई वाली attempt दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह it's cleared. तो उसमें हमारा जो passing marks थे that was 117. So basically ये उनका अपना criteria है. I don't know much about it. उन्होंने अपने हिसाब से देखना होता है कि what is the number of the candidates, how they performed on the test day, or they have a certain requirements के इतने number of candidates we want to pass this year. So they just put a cutoff over there, और उसके ऊपर जितने candidates होते हैं they pass. So इस basis इन basis के ऊपर आपका एग्जाम से एग्जाम वेरी करता है. There is no specific passing criteria. The details are not shared with us. So there are total number of 4 attempts. खुदा ना खास्ता अगर किसी का first attempt में नहीं होता, he has got 3 more chances. In fact, अगर आपके चार chances complete हो भी जाते हैं, so you just have to write an application to GMC mentioning that I have written it 4 times this exam, and I have been working in this hospital for more than 1 year period. आप लोगों को ये चीज़ make sure करनी होती है कि आप उनको अपना skill set बताएं कि आप more than 1 year you have been working in a hospital, आपका skill set है and you can do it this time. So you just have to make them sure. तो आपको fifth attempt भी मिल जाती है कुछ conditions के अंदर. So बाकी उसको मजीद जब dissect करेंगे then we'll go for it. So candidates, please last slide. Okay. Candidates must register and pay the exam fee in advance to secure a place for the chosen exam date. So, most important thing, let me share with you my journey, what I did for booking this PLAB 1 exam. So, I was in final year. I have written my stand-ups.
and I was having my pre-prof vacation, you may say that. So हमारा prof था in uh, February, yeah, हमारा February 16 को first prof था pediatrics का, and I booked my OET exam in the end of January. मैंने अपना prof से पहले ही अपना OET book करवा दिया था because I knew that I would be free in the first week of April. So I got a date of 29th of April for my OET exam. तो उसमें आप book करवा सकते हैं. You just need a passport or an ID card for booking that exam. और उसकी I guess कल हमारा session भी हुआ है regarding OET. तो उसमें आपकी फीस होती है 587 Australian dollars, I guess, if I'm not exact. So I guess it's $587. So Pakistani rupees में बात करें तो I was charged 1,22,000 for this exam. So I after my prof I prepared for it you may say in 2 weeks, and I appeared in that, and Alhamdulillah I passed it. So reason for reason was that uh, हमें GMC की तरफ से in the last week of January I got to know that GMC is going to release seats for 2 dates. One was November and one was February next year. So basically, I'm talking about 2022. Let me make this thing clear. I'm talking about 2022, sorry, 2023, जिसमें हम लोगों ने अपना प्रॉफ दिया था. उस साल हमें पता चला कि GMC is going to release seats for PLAB 1 November 2023 and February 2024. ये दो सीट्स रिलीज कर रहे थे वो in March 18th of March 2023. अब हमारा प्रॉफ था कि February के अंदर February 16 को स्टार्ट हो रहा था, and we were going to complete it in the first week of April 2024 23. So मुझे काफी जो था ये इशू था कि मतलब I'm not getting, मेरा प्लान था कि मैं during my house job ही अपना PLAB 1 कर लूँ ताकि at the end of my house job I'll be going to UK and giving PLAB 2. So मुझे उस टाइम पे काफी इशू हुआ इस चीज को लेके, बिकॉज जब आपका प्लान पूरा नहीं होता तो आप काफी अपसेट हो जाते हैं इस चीज को लेके. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने अपना प्रॉफ के बाद जो मेरा मुझे फर्स्ट डेट मिली फॉर माय OET एग्जाम आई गॉट इट बुक्ड, क्योंकि साथ साथ मैं फिर अपना जब मैंने मेरे रिटर्न्स हो गए थे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय वाइवास एंड ऑस्पीज आई स्टार्टेड माय OET प्रिपरेशन एज वेल. तो साथ साथ हल्का फुल्का मैं अपना उसको OET की प्रिपरेशन करता रहता था. तो फिर आफ्टर completing my prof I totally devoted myself to the preparation of OET, and then I written that exam. So uh, 29th को मेरा एग्जाम था. I got my results on 16th of May, and then we got a news that GMC is going to release seats for PLAB 1 in June 2023. और जून 2023 के अंदर हमारे पास दो सीट्स आ रही थी. एक February 2024 जो पहले मार्च में भी आई थी, बिकॉज उस टाइम पे कुछ सीट्स बच गई थी, दैट्स व्हाई उन्होंने इसके अंदर ऐड कर दी थी. एंड सेकेंड मई 2024 जो मैंने अपना एग्जाम बुक करवाया था. सो बेसिकली ये चीज आपको जो है वो मेक श्योर करनी होती है, बिकॉज वेन एवर यू गिव OET आपको विद इन 2 years आपने अपना PLAB 1 भी क्लियर करना है, PLAB 2 भी क्लियर करना है, ताकि आपको GMC का लाइसेंस मिल सके. अदरवाइज आपका PLAB हो जाएगा, आपका PLAB 1 भी हो जाएगा, PLAB 2 भी हो जाएगा, बिकॉज PLAB 1 के भी विद इन 3 years यू आर सपोज टू डू PLAB 2. तो वो कोई मसला नहीं होता, आप 3 साल के अंदर कभी भी कर सकते हैं. बट इशू इज कि आपको फिर OET दोबारा देना पड़ेगा. सो हम लोग बेसिक इसको रखते हैं कि हम OET जब करेंगे तो उसके विद इन 2 years वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा PLAB 1 भी हो जाए, PLAB 2 भी हो जाए, ताकि हमारा GMC का लाइसेंस हम एक ही गो में अप्लाई कर सके विद इन 2 years. इट्स अ 2 year प्रोसेस. ठीक है. तो कुछ लोगों का इससे भी जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों का 1 साल लेट हो जाता है, तो फिर दे हैव टू गिव
English language test, OET or IELTS, whatever they like. So I think Amar is not with us. तो आई वुड ट्राई कि अगर मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं, या जन्नत अगर आपके पास कोई है बैकअप इसका। श्योर, मैं करवाती हूँ स्क्रीन शेयर। ओके। सो तो बेसिकली हमारा मकसद ये था कि हम लोगों ने अपना टाइमलाइन डिसाइड करनी है, व्हेन टू डू इट, हाउ टू डू इट। क्योंकि हाउ टू डू इट ये सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज शुड आई डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लोर योरसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन टू डू इट। व्हेन टू डू इट। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने प्लान भी करना है, इट्स वेरी नाइस। नेक्स्ट आपने डिसाइड करना है कि अब आपकी टाइमलाइन क्या होनी चाहिए। हर बंदे का टाइमलाइन वेरी कर सकता है। कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग लेट करते हैं, कुछ लोगों के अपने प्लान्स होते हैं। इट्स टोटली अ सब्जेक्टिव थिंग। सब लोगों को अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि उन्होंने कब करना है। नाउ कमिंग बैक टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर। सो बेसिकली हमारे पास जब तक स्क्रीन शेयर नहीं होती तब तक मैं आपको मोटे मोटे पॉइंट्स बता देता हूँ, जितना मैंने रिसर्च किया था। बाकी कुछ अगर रह गया तो विल सी द स्लाइड्स एज वेल। ओके। सो प्लैब 1 की बेसिकली प्रिपरेशन। Now coming towards the preparation आपकी यही है कि you have to complete your final year. Eligibility basically हमारे पास ग्रेजुएशन के बाद ही बनती है। It's not like steps that USMLE के steps कि आप within third year, fourth year आप अपना एग्जाम दे सकें। ये इसके लिए रिक्वायरमेंट है whenever you clear your OET, then you have to give your results of your English language to the GMC। आपने GMC पे अपना अकाउंट बनाना है। GMC पे अकाउंट बनाने के बाद आपने उसमें अपना इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट का एक्सेस देना है उनको, ताकि वो वेरीफाई कर सकें कि आपके स्कोर्स जो हैं वो इफ यू आर एलिजिबल और नॉट फॉर बुकिंग अ प्लैब 1 एग्जाम। देन जब आपको वो आपको मिल जाता है, गो अहेड मिल जाता है, देन यू गॉट टू नो कि किस दिन सीट्स रिलीज हो रही हैं फॉर पाकिस्तान। जनरली आप सॉरी आप लोग सारे पाकिस्तान के लिए ट्राई करेंगे, बट कुछ लोग होते हैं जिनके रिलेटिव्स हैं किसी और कंट्री के अंदर। सऊदीया में हो सकते हैं, श्रीलंका में हो सकते हैं, किसी दुनिया में, यूके में हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। तो वो लोग फिर अपने हिसाब से अपने एग्जाम्स बुक करवा लेते हैं। अगर उन सीट्स अवेलेबल होती हैं पहले, तो वो किसी और रीजन में, तो वो पहले की बुक करवा लेते हैं। अदरवाइज दे हैव टू वेट फॉर जीएमसी टू रिलीज सीट्स फॉर देयर कंट्री और देयर डिजायर्ड कंट्री, डिजायर्ड रीजन। तो फिर उस हिसाब से आप लोग अपने सीट्स बुक करवाते हैं। ठीक है, सीट्स बुक करवा ली। अब सीट्स बुक करवाने के लिए आपको जीएमसी के अंदर जब आपने इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट दे दिया, आपने वो सब कुछ कर दिया, एक्सेस दे दिया, आपको अपनी क्वालिफिकेशंस भी उनको एविडेंस देना पड़ता है कि यू हैव कंप्लीटेड योर एमबीबीएस। वो फिर उसको भी वेरीफाई करते हैं, और फिर आपको जो है दे गिव यू अ गो अहेड दैट यू आर एलिजिबल टू बुक अ प्लैब एग्जाम। सो वो स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट में अभी हैं, लाइक फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, क्योंकि फोर्थ ईयर फाइनल ईयर आर द ईयर्स जिसके अंदर they have got a lot of work, clinical side ka. They have to go to the wards, they have to prepare for their exams as well, for the professionals. बाकी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर यू नो आई डोंट नो कि अभी आप लोगों का मॉक सिस्टम है उसका क्या शेड्यूल होता है, आप लोगों का हॉस्पिटल एक्सपोजर है कि नहीं। बट हमारे टाइम पे नहीं था, तो वी वर फ्री काइंड ऑफ तो इसलिए तब आप लोगों के लिए यही मेरी सजेशन है कि यू गाइस कैन फोकस ऑन वर्किंग ऑन योर सीवी, बिकॉज सीवी बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर गेटिंग अ जॉब इन यूके। आजकल सैचुरेशन, यस सैचुरेशन ज़्यादा हो गई है। लोग काफ़ी आपको कहते होंगे कि यूके प्लाप करने की ज़रूरत नहीं है, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। मालदीव में सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, उधर ब्रुनाई में सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। बाकी एमएलई के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सैचुरेशन वाला वर्ड यूज भी करता है, बिकॉज इट्स वेरी कम्पेटिटिव। आपको अपनी सीवी पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। आपको उधर इलेक्टिव्स करने पड़ते हैं, आपको इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं बहुत ज़्यादा, आपको पब्लिकेशंस चाहिए, रिसर्चेस चाहिए। आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल टू सेट फॉर द मैच एंड गेटिंग इट।
सो आई थिंक अभी आप लोगों के लिए फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मेरी यही सजेशन है कि इफ फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लोर explore if you want to do it. So we got the slides back. Okay, so first of all, explore that what do you want to do in your life? गोल क्या है? यूके में प्रैक्टिस करना है, अमेरिका में प्रैक्टिस करना है, या ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस करना है, या आप मिडिल ईस्ट में प्रैक्टिस करना है, whatsoever. Just first of all, you have to make sure that what is your goal? Where do you see yourself? Where do you see yourself in 5 to 10 years working? सो गोल बनाना जरूरी है. ओके, सो हम कहाँ पे थे? प्लैब 1 की प्रिपरेशन के ऊपर. यस, it covers a comprehensive range of medical topics and clinical scenarios relevant to the general medical practice. Questions are distributed across various specialties, including medicine, surgery, obstetrics and gynecology, pediatrics, psychiatry, etc. So these are the subjects जो आप डिटेल में पढ़ेंगे फाइनल ईयर के अंदर. अभी जो है आपको बेसिक्स उन्होंने पढ़ाई होंगी डेफिनेटली, इवन दो फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर भी उनको बेसिक्स ही करवाई होंगी मेडिसिन और सर्जरी से रिलेटेड, या ऑब्स्टेट्रिक्स का भी आई गेस गायनी आउट भी कराया होगा, बट these are just basics. So you have to make sure कि आप अपना फाइनल ईयर कंप्लीट कर लें, आप ग्रेजुएट हो जाएं, you get your degree and then you can apply for that for PLAB 1 exam. It assesses knowledge across the clinical conditions, diagnostic procedures, treatment options, and management plans. Typically prepare for PLAB 1 by studying comprehensive medical textbooks, online resources like PLABable and MedRevisions. These are very famous. And yes, uh, I got a subscription of PLABable, and trust me, uh, each and every MCQ was from it. हाँ, मेरा कुछ lack area था that I haven't prepared well for. I haven't gone for mocks. मैंने सिर्फ एक या दो mocks किए थे because I didn't have time, because मेरी house job की rotation भी चल रही थी, तो I have to go there as well. So but I would assure कि हमारा exam total plabable में से ही था. Every topic was covered very in a very good manner. First of all, it's not a paid, review. It's not a paid review. Definitely, Plavable is a very good thing. आपको clinically ये बहुत अच्छा train करता है. Almost 34 to 3500 MCQs होते हैं इस ऐप के अंदर, इस सब्सक्रिप्शन में. तो दैट वाज वंडरफुल. बहुत अच्छा जो है उसके अंदर उन्होंने सिनेरियोस दिए होते हैं. आपको ऐसा लगता है कि आप रियल लाइफ सेटिंग के अंदर ही पेशेंट को देख रहे हैं, और आपकी लर्निंग भी बहुत अच्छी है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एक्सप्लोर करें, जो भी अभी प्लैब के लिए प्लैब जर्नी पे हैं. यू गाइस शुड एक्सप्लोर, यू गाइस शुड Excuse सी. me. जी जी. Sorry, Bilal, sorry to interrupt you. नो नो All the इश्यूज. participants kindly leave your questions in the chat box. As this meeting is going to end in hardly 5 to 10 minutes, तो उसके बाद हम लोग एक नया link share करेंगे, and ओके, then you will ask the questions. Thank you so much. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. सो ठीक है, तो आप लोग अपना रिसोर्सेज जो हैं एक्सप्लोर करें. मेड रिविजन्स भी है, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है ऑनलाइन. उनकी वेबसाइट पर जाके यू हैव टू मेक एन अकाउंट, यू हैव टू शेयर योर पेमेंट डिटेल्स ओवर देयर, एंड देन आपको जो है वो सब्सक्रिप्शन मिल जाती है. आई हैव गॉट सब्सक्रिप्शन फॉर $35 फॉर 5 months. यस, तो मैंने अपने एग्जाम डेट से 5 months बैक मैंने सब्सक्रिप्शन ली थी. $25 were for the question bank and $10 were for gems. Gems basically हमारे होते हैं कि जो भी topics overall frequently asked questions that are present in the exam, PLAB 1 exam, वो सारों के one-liners visually बहुत वंडरफुली और बहुत इजी वे में उन्होंने बनाए होते हैं जेम्स के अंदर. तो आप लोग गो थ्रू करें जो प्लैब 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या जो अभी प्लान कर रहे हैं प्लैब के लिए. तो आप लोग अपने फेलोज से, अपने सीनियर से कहिए कि मतलब लाइक गिव देम अ लुक, हाउ डज इट लुक. या आपका तो आजकल हर चीज जो है ऑनलाइन अवेलेबल है. यू गाइस कैन सी ओवर द इंटरनेट. आप यूट्यूब पे देखें, रिसर्च करें, आपको ओवरऑल पिक्चर्स मिल जाएंगी. इवन तो उनकी वेबसाइट्स के ऊपर कुछ सेगमेंट्स जो हैं उन्होंने लाइक जस्ट फॉर एज अ सैंपल उन्होंने दिया हुआ है, ताकि आप उनके गो थ्रू करें नोट्स. इफ यू फाइंड देम अट्रैक्टिव और फाइंड देम इंफॉर्मेटिव, you can get their subscription. So explore
explore the market, explore the online portals और देखें कि आपको क्या कौन सा रिसोर्स जो है आपको सूट करता है और क्योंकि हर रिसोर्स के अंदर ऑलमोस्ट कम और बेश एक ही चीज लिखी होती है आप कान यहाँ से पकड़े या यहाँ से पकड़े पकड़ा तो आपने कान ही है ना तो आप लोगों को जो है आइडिया हो जाएगा जस्ट एक्सप्लोर the question banks. Now, coming towards PLAB 2, its structure. Okay, so it evaluates the practical clinical skills and competencies of IMGs, ensuring they meet the standards required for safe and effective medical practice in the UK healthcare system. It's conducted throughout the year on various dates. You can book the slot through GMC online once you have your PLAB 1 results. Conducted in two assessment centers sites in the Manchester UK. ये मैंने उनका एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैनचेस्टर के अंदर होता है यूके के अंदर GMC Clinical Assessment Center 3 Hardman Square and 3 Hardman Street. So PLAB 1 can be written anywhere in any region in the world. बट प्लाब टू के लिए अभी तक उन्होंने सिर्फ उसको लिमिटेड रखा हुआ है यूके के अंदर के मैनचेस्टर में सिर्फ मैनचेस्टर के दो क्लिनिकल सेंटर्स हैं जहाँ पे हमारे पास प्लाब टू का एग्जाम होता है बट यस डेट्स हमारे पास हर टाइम अवेलेबल होती हैं इनफैक्ट मैंने भी अभी कल जो है उधर एक्सप्लोर किया था उनकी वेबसाइट जीएमसी की बिकॉज आई गॉट माय रिजल्ट्स after 24 hours I got able to see the available seats so उधर हमारे पास सितंबर की भी थी अगस्त की भी थी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी जनवरी के भी नहीं आई दिसंबर तक की सीट्स वहां पे हमें शो हो रही थी एंड इट वाज ऑलमोस्ट ऑन एवरी अदर डे सो उसमें सीट मिलने का इतना इशू नहीं है सीट मिलने का इशू है प्लब वन में बिकॉज इट टक अप्रॉक्सिमेटली यू नो लास्ट मैंने जून में बुक करवाई थी इस मई की सीट सो इट वाज अप्रॉक्सिमेटली 10 to 11 months का गैप between my OET and my PLAB one. So yes, ये थोड़ा सा इशू होता है seats का, but PLAB 2 की seats alhamdulillah they are easy to get whenever you feel confident about your preparation because it takes approximately 5 to 6 months to prepare for PLAB 2. Again, it's totally a subjective thing. कुछ लोग PLAB 1 2 हफ्ते में भी करते हैं मैंने कुछ फ्रेंड्स से बात की they said we have just studied for 2 hours. I guess it's more appropriate to call them snakes. What do you say? I think so. So 2 हफ्ते में भी प्रिपेयर करते हैं 2 महीने में भी प्रिपेयर करते हैं कुछ लोग होते हैं जो 8 महीने लेते हैं कुछ लोग होते हैं 5 महीने लेते हैं 6 महीने लेते हैं साल लेते हैं so it's totally a subjective thing. So we can't say but generally overall जो मैंने उनका content देखा है प्लाब 2 के लिए I think it's good if you prepare for it where in 4 to 5 months आप अपना 4 से 5 महीने के हिसाब से अपनी dates जो है वो select करें ताकि it's a huge amount अभी हम जब कॉस्ट की तरफ जाएंगे तो अमाउंट बहुत ज्यादा है सो why taking risk सो इसलिए प्लान अकॉर्डिंगली अपना जो भी विजिट की डेट है जिसमें आपको वहाँ पे रहना भी है बिकॉज यू आर गोइंग ऑन अ विजिट वीजा you are not allowed to do the odd jobs or whatever to sponsor your living expenses over there. So आपको अपने घर वालों पे ही बोझ डालना पड़ता है. So yes, yeah, maybe it's for 1 month, 2 months, 3 months, depending कि आप वहाँ पे हैं कि नहीं. So plan accordingly. So ओके इसकी भी 4 अटेम्प्ट्स हैं सिमिलरली अगर खुदा ना खास्ता 4 अटेम्प्ट्स हो जाती हैं नहीं होता यू हैव टू write them an application mentioning that you have been working for more than 1 year in a clinical setting you have a particular skill set and now you want to reappear in the exam and you can get a one bonus attempt so it usually consists of 18 stations 18 stations होते हैं इसके in each station it assesses different aspects of the clinical practice or skills total time that is required in the PLAB 2 exam is 3 hours 10 minutes जिस तरह आप लोगों की OSPE होती है like आप लोगों को आइडिया होगा
सबसे हमारा फनी एक्सपीरियंस जो मुझे याद है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, और सबसे मजेदार टाइम वो हमारा गुजरता था ऑफ पीस के अंदर। यू उधर उनको वक्त अलग ही जो है उनको वो एक स्ट्रेस होता था, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बनाया होता था, हालांकि इतना स्ट्रेसफुल चीज होती नहीं थी, बट इतना एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल बनाया था। मूव मूव मूव, दैट वाज सो दैट वाज सो हिलेरियस। सो ये या इसी तरीके से आपके ना कुछ केबल्स उन्होंने बनाए होते हैं स्टेशन के। सो इट टोटल टाइम हमारा 3 hours और 10 minutes का होता है अप्रोक्सीमेटली। यूल हैव 1.5 minutes between the test scenarios in order to read the instructions and patient information. Each station will be approximately of 8 to 10 minutes. In each station, it is scored based on the predefined criteria. बाहर आपके पास एक चिट लगी होती है, उसपे आपको जो भी टास्क आपको असाइन होता है उस पर्टिकुलर स्टेशन के लिए, like for instance you they would say कि there's a patient inside who is this and whose age is this, and he has been admitted for the acute concern of diarrhea, and you are supposed to take a history of the patient, and you are supposed to brief about the condition and his history to the doctor. You may say your senior doctor, your senior colleague, or the nurse, whatever. So depending on the situation, depending on the task, you have to align yourself, you have to get inside, you have to introduce yourself, you have to know the particular examinations that are required for that particular condition. For example, if the patient is saying that he's having diarrhea, so you have to get first of all introduction, then you have to ask about his introduction, his queries, like his demographics, where he is from, what's his address, what's his name. Then you have to ask what for what concern he was in this facility. Then you have to get the HOPI, history of presenting illness. Then you have to do the clinical assessment of other systems as well. Then you have, if they are asking for the examination of the relevant system as well. So diarrhea is related to the GIT. GIT के अंदर हम लोग abdominal examination करते हैं, और तो abdominal examination भी करेंगे. After doing that, हम लोगों ने इसको, we have to wind it up in 5 to 6 minutes, and then for 1 to 2 minutes we have to give the total findings. We have to elaborate it to the interlocutor who's present over there, who's getting, who's observing everything. क्योंकि वहाँ पे cameras भी होते हैं, हमारी videos record होती हैं, and then on the basis of that हमारा assessment होती है. ठीक है. So yes, ये सारा आप लोगों को बताने का बेसिक मकसद ये था कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से एग्जाम की सेटिंग होती है, किस तरह से होता है. क्योंकि जब आपको एक माइंड में एक रफ स्ट्रक्चर बन जाता है ना, हाउ इट इज डन, देन आधा काम आपका हो चुका होता है. देन यू जस्ट हैव टू गो फॉर इट. तो काफी इजी हो जाता है. अगर आपको पता ही ना हो बेसिक्स, व्हाट आर द बेसिक्स, किस तरह से लेके चलना है, क्या चीजें होती हैं, जब आपको वो आइडिया ही नहीं होता, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज और डाइव इनटू दैट थिंग. तो उसमें फिर आपको एक एक करके जब तक बहुत टाइम लग जाता है. सो ये सेशंस के ऑर्गेनाइज करने का मकसद बेसिक है ही यही कि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये एग्जाम्स जो सुनने में लगते हैं कि आई डोंट नो व्हाट इज इट, oh my god. Honestly, when I was in first year or second year, and I have joined various Facebook pages of USMLE groups or PLAB groups. So uh, whenever I saw the post that yeah, Alhamdulillah, I cleared my PLAB one exam. साथ उन्होंने अपना जो है पिक्चर शेयर की होती थी. So even in या फिर स्टेप वन एग्जाम इतना स्कोर I've got it, या पिक्चर शेयर की होती थी, वो जो आप लोगों को आइडिया होगा एमएलई के रिजल्ट की पिक्चर जिस तरह की होती है. So at that time I was like, will I be able to do it? Obviously, मतलब it's you guys can connect. आप लोग को समझ आ रही होगी कि जब भी आप कुछ अच्छी चीज देखते हैं and your colleagues are doing it, so आप लोग को होता है कि will I be able to do it? तो वो एक चीज जो थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, after getting my result 2 days back,
Uh, I said, Alhamdulillah, Alhamdulillah, by the grace of Almighty, yes, I have done it. So वो जो एक particular feeling होती है ना, inshallah, 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 I want every one of you to feel that. Just explore yourself, just explore the opportunities out there, and just go for it. Dive into it. Inshallah, inshallah, नीयत अच्छी होके अल्लाह ताला आपके रास्ते बहुत आसान कर देंगे, inshallah. Okay, so PLAB 2 preparation की तरफ आते हैं हम. It assesses the range of clinical skills and competencies. Simple as that. You just have to go for that particular exam. आपके stations होते हैं और हर आपको idea हो गया होगा कि किस तरह से के clinical scenarios आते हैं. अब उसमें क्लिनिकल सिनेरियोज भी होते हैं, कुछ क्लिनिकल स्किल्स भी होती हैं, कुछ आपके पास आपको हिस्ट्री लेने के लिए कहते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए कहते हैं, क्लिनिकल रीजनिंग करने के लिए कहते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं आपसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जज करने के लिए, या फिर प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स लाइक दे वुड से कि वहाँ पे एक डमी मैनेजमेंट पड़ा है और वो कहते हैं उनको कि जस्ट पास एन आईवी लाइन. तो ये भी आपको डायरेक्शन मिल सकती है. सो बेसिकली इट्स लाइक दैट. तो इसके लिए आपको कुछ अकेडमीज अवेलेबल हैं मैनचेस्टर के अंदर. आई एम एक्सप्लोरिंग दीज डेज एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह once I get to know about that, I'll share the details with you, with Jannat as well. She will tell you about that. So उधर मल्टीपल academies हैं और वहाँ पे आपने देखना होता है कि what are they offering, because they also charge. सो आपने देखना होता है कि वो आपके ऑनलाइन सेशंस उनके कुछ होते हैं, ऑनलाइन सेशंस बाय स्टेइंग इन योर पर्टिकुलर कंट्री. आप उनके ऑनलाइन सेशंस ले सकते हैं, आपको नोट्स शेयर करते हैं. यू जस्ट हैव टू क्राम इट, अंडरस्टैंड इट, प्रैक्टिस इट, व्हाटएवर सूट्स यू. सो आप उसको प्रिपेयर करते हैं और फिर उसके बाद आप उधर जाते हैं. एक महीने का मॉक सेशन देते हैं. मॉक सेशंस के अंदर आपके पास प्रैक्टिस करवाते हैं आपके स्टेशंस की. आपका बताते हैं कि हाउ टू टेक द हिस्ट्री, हाउ टू इंटरेक्ट विद द पेशेंट, व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स, एंड मैनेजमेंट्स के ऊपर प्रोसीजर्स भी करवाते हैं लाइक आईवी लाइन पास करना, यू नो और फॉर इंस्टेंस ब्लड प्रेशर आप किस तरह लेते हैं, या आप रेडियल आर्टरी पैल्पेट करें, डोर्सालिस मीडियस आर्टरी पैल्पेट करें, whatever the thing may, the scenario may be. तो उस हिसाब से आप okay. I'm sorry. Can you please just give me 2 minutes so that I can connect my phone to the charger, because charging is low here. I hope you guys don't mind. To get a license to practice over there, GMC license. You got it? अब GMC license लेने के different तरीके होते हैं. Number one, PLAB examination. That is the basic thing. आप सिर्फ licensing exams देते हैं, आपको उधर license मिल जाता है. You can practice in private. You can apply for the government NHS jobs. You can practice over there, get in the training program, and so far and so forth. Next तरीका है MRCP. MRCP is a proper Royal College exam. आप MRCP Part 1 करते हैं, MRCP Part 2 करते हैं पाकिस्तान के अंदर. Paces, I guess they have started it in Pakistan this year, or I'm not sure about that. Yeah, they are planning to start it, or they haven't yet. So पेसेस करते हैं, वो भी ऑस्की टाइप एग्जाम होता है. दैट इज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू प्लान. दैट्स व्हाई उसमें आपको पहले you have to get experience, or you can just stay at home, prepare for the exam and just go for it. उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप जो है वो नहीं दे सकते. यू कैन गो फॉर इट आफ्टर योर गेटिंग योर डिग्री. बट थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा उसमें हार्ड वर्क है. आप उसको करते हैं, आपको लाइसेंस मिल जाता है, देन यू कैन प्रैक्टिस ओवर देयर. तीसरा पाथवे है, you get into the FCPS training program here in Pakistan. There are certain ways जिसमें आपका exchange program के through you are allowed कुछ speciality की training वो आपको allow करती हैं, that you have completed 5 years की training है, 2 to 3 years you have completed in Pakistan. Then on the exchange program you can go over there, spend 2 to 3 years over there. You can practice over there. आप होंगे इधर के ही ट्रेनिंग आपकी पाकिस्तान की ही होगी. बट इट वुड बी मेंशन्ड कि ऑन द एक्सचेंज प्रोग्राम you have went in the UK
और यूएस और wherever जहाँ पे इन लोगों का एमओयू साइन होता है, उन उधर भेजते हैं और ट्रेनिंग करवाते हैं, बट यू हैव टू बी इन पाकिस्तान बैक। हाँ, कुछ ये ऐसी सिनारियोस होते हैं कि अगर आपका वहाँ पे सुपरवाइजर जो है, इफ ही लाइक्स योर वर्क, तो देयर आर वेज जिसमें आप उधर प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी कंटिन्यू, आपको अगर जॉब मिल जाती है। सो बेसिकली जुगाड़, यू नो व्हाट इज जुगाड़? जुगाड़ हर जगह चलते हैं। जुगाड़ इज इन अ सेंस कि अगर वहाँ का रिक्रूटर wants me to work over there, he or she just send a letter to the GMC or the higher authorities or the UK government that I want this particular person to be with me, to be my assistant, or to work in my firm over there, and I want him from Pakistan. आपका वीजा लग जाएगा. He's your recruiter. He is responsible. पाकिस्तान उधर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो इट जुगाड़ होते हैं जनरली. एक चीज होती है पाकिस्तान के अंदर, सिफारिश कल्चर. सिफारिश सिफारिश जो है बहुत नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, बट इट हैपेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड इन द नेम ऑफ नेटवर्किंग. So, yeah, it happens. It totally depends. It's totally a subjective case. बस आपने प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं जो उस कंट्री, उस रीजन के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. यू हैव टू फॉलो दैट. जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तो यस, यू कैन प्रैक्टिस ओवर देयर. ये कुछ पाथवेज थे जितना मुझे आइडिया था. बाकी डेफिनेटली और भी पाथवेज होंगे. आई डोंट नो अबाउट देम राइट नाउ, but once I get to know about that, I'll definitely share them with you. Thank you. Okay, the next question is, how can we work from our basics, which will make us able to pass all the hurdles? I'm sorry, I didn't get that. Can you please repeat that question again? How can we work from our basics, which will make us Uh-huh. able to pass all the hurdles? Pass all the hurdles in what sense? I don't know. Someone I has would left this really question appreciate. here. I would really appreciate जिसने भी ये क्वेश्चन किया है वो जरा थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ अपना पर्सपेक्टिव शेयर करे, अपना क्वेश्चन शेयर करे, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकें. बेसिक से अगर इसको हम जनरल वे में लेके चलें तो बेसिक से ही अपने आप को इतना प्रिपेयर करना था कि आप फ्यूचर हर्डल्स को क्रॉस कर सकें. दैट इज जस्ट योर मोटिवेशन एंड योर डिसिप्लिन. दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. योर डिसिप्लिन, योर गोल, द डेडिकेशन टुवर्ड्स योर गोल. ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप कितने डिटर्मिन्ड हैं अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, अबाउट अ पर्टिकुलर गोल. दैट वुड डिसाइड कि आप जो हैं अपने हर्डल्स क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं. हार्ड वर्क डेफिनेटली, हार्ड वर्क, मिक्सचर ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क इज रिक्वायर्ड. बाकी अगर आपको लगता है कि शॉर्टकट से जिंदगी बनती है तो नहीं, आई एम सॉरी. मैंने अभी तक किसी को भी नहीं देखा कि जिसके शॉर्टकट से सक्सेसफुल हुआ हो. Everyone, I have been studying work business models of the top companies like Microsoft, like Steve Jobs की लाइफ में स्टडी कर रहा था. बाकी कुछ बिजनेसेस के मैंने पाकिस्तान के भी कुछ बिजनेस मॉडल्स जो है वो स्टडी किए थे. तो उनके सीईओज और उनके जो भी जिन्होंने स्टार्ट की कंपनी, वट एवर देयर पोजिशंस वर, मैंने सिर्फ यही देखा है कि दे हैव गिवन देयर बेस्ट टू दैट पर्टिकुलर थिंग. शॉर्टकट से कोई ऊपर नहीं आया. So yes, you have to be very clear about your goal, and you should be ready 24/7 to give your best shot. Thank you. I hope जिसका भी क्वेश्चन था उसको एड्रेस हो गया है ये. Thank you. Next question is, as a fourth year Mhm. student, how can we work Mhm. on our CV to make it better? Which things Okay. really matter? Okay, sure. So, I'm sorry, मेरे ख्याल से ये वाली बात मैं करने लगा था, ये बीच में मिस हो गई थी when I was talking about the first and second year students के वो अपनी सीवी के ऊपर काम करें, बट मैंने मेंशन नहीं किया था कि किस तरीके से काम करें. यस. हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है दैट
यस, मुझे यूके में ही काम करना है, मुझे यूके की हेल्थ केयर सिस्टम का समझ आ गया है, आई वांट टू वर्क ओवर देयर। सो जैसे कि प्लैब वन एग्जाम कैन ओनली बी गिवन वंस यू आर ग्रेजुएटेड। सो fourth year, third year, second year, first year, when in whatever year you are, in whatever professional you are studying right now, आप लोग ये कर सकते हैं, what you can do is, number one, researches. सिटिंग इन पाकिस्तान, आप अपने हॉस्पिटल के अंदर रिसर्चेस कर सकते हैं, आप ऑडिट्स कर सकते हैं, ठीक है। ऑडिट्स करके आप उनको एक वेल रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर पब्लिश कराएं, ठीक है। दिस इज वन थिंग, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज, आप यूके के अंदर अपॉर्चुनिटीज देख के, अवेलेबिलिटीज इन द हॉस्पिटल्स चेक करके आप उधर इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन योर समर ब्रेक्स, आप उधर जा सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग अ जॉब इन यूके। जो चीज आपने बाद में करनी है, दैट थिंग यू आर डूइंग इन योर degree while studying in the college, अगर आपका ये कंप्लीट है तो इट्स वेरी गुड थिंग। अगर आप उन लोगों को मेंशन करते हैं, हो सकता है कि जो हाउस जॉब, हमारी हाउस जॉब 1 ईयर की होती है, उनकी हाउस जॉब 2 ईयर्स की होती है। अगर आप अपने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जिसमें भी आप अगर उधर जाके इंटर्नशिप्स करते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर अटैचमेंट्स करते हैं, तो इट्स हाईली पॉसिबल कि अगर आप अपना प्लैब वन, प्लैब टू विद इन 1 ईयर अगर आप कर लें, अपना हाउस जॉब वाले ईयर को स्किप करके अगर आप वो कर लें, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली वो अपने फाउंडेशन ईयर वन के अंदर भी इनरोल कर सकते हैं, जो उनकी हाउस जॉब का पहला ईयर होता है। दैट इज वेरी डिफिकल्ट, वो दैट इज वेरी कम्पिटिटिव फॉर फॉर द IMGs लाइक अस। तो आप वो कर सकते हैं, उससे आपकी सीवी बहुत इम्प्रूव होगी। तो these are particular things, and most important thing, do research. जितना आप रिसर्च करेंगे, मुझे अभी तक यही चीज मिली है कि these are the things that actually weighs a lot in your CV, जो देख के लोग, क्यों रिक्रूटर आपको जो है वो जॉब देगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। Okay, thank you so much, Bilal bhai. Uh, वेलकम। I think no more questions now. Okay, thank you, Nisa. If anyone from the audience have any sort of questions, he can ask. He or she can ask me right now. Otherwise, हम session end कर लेते हैं फिर. I guess no more questions. Thank you so much, Bilal bhai. Your expertise Thank and you. advice have been incredibly helpful, and we greatly appreciate for your time and effort. Thank you so much. Thank you so much, Nisa. And most importantly, I would appreciate Jannat. You have done a remarkable job, and Nisa, you have conducted this session in a wonderful manner. Hassan, Jannat, you guys, Nisa, Puri Singh family, you guys are doing a wonderful job. And inshallah, I hope कि ये जो Singh family है, it will grow more. और एक टाइम आएगा कि this society will be on the top of every other society, inshallah. Because making students determined and focused on their goals, that is very much important. Starting से ही अगर आप अपने goals की तरफ focus होंगे, तो you can achieve, inshallah, by the grace of Almighty, you can achieve anything, whatever you want. So जो पौधा ईमन आपी ने लगाया था, अल्लाह का शुक्र है, दरख्त बन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह. Really appreciate that.